Hello everyone. Today we are talking about the or discuss about the generation of computer for UGC NET June 2025. ठीक है तो let's start. First generation computer was developed 1942 to 1955. ठीक है and hardware यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब and सॉफ्टवेयर मशीन लैंग्वेज बाइनरी 0 and 1 and memory यूज किया गया था मैग्नेटिक टेप्स and मैग्नेटिक ड्रम्स. ठीक है and input output device paper tape and punch card and language यूज किया गया था लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज 0 and 1. ठीक है and फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो एग्जांपल है आप लोग देख सकते हैं इनैक इडीवैक यूनिवैक IBM 650 IBM 701 are the example of the first generation of computer and इसका advantage and disadvantage of first generation computer देख लेते हैं. Consumption lot of energy and expensive, large in the size and higher energy and consumptions of greater chance to error. ठीक है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 टू 1964 पर आया था. ठीक है यहाँ पर हार्डवेयर यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स एंड सॉफ्टवेयर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैग्नेटिक कोड एंड मैग्नेटिक डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइस मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड यूज किया गया था एंड लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज फोटन फोटन ALGOL COBEL यूज किया गया था. एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का जो एग्जांपल है PDP-8 IBM 1400 सीरीज IBM 7090 7094 यूनिवैक 1107 CDC 1300 3600. ठीक है these are the example of the second generation computer. ठीक है and advantage and the disadvantage देख लेते हैं. Smaller in the size and low power consumption and generated less heat. Next third generation computer develop हुआ था 1965 to 1975 and integrated circuit SSI MSI हार्डवेयर यूज किया गया था. ठीक है and software time sharing multi program Ming operating system and language large magnetic code memory यूज किया गया था large magnetic code magnetic tapes और disk यूज किया गया था and input output system magnetic tapes monitor keyboards printer etc. and language high level language Pascal बेसिक्स etc. यूज किया गया था एंड फॉर एग्जांपल IBM 360 IBM 370 and PDP 11 and NCR 395 for example of the third generation of computer. And advantage relatively fast and small and cheap and easy to use. ठीक है and fourth generation computer आया था 1976 to 1989 माइक्रोप्रोसेसर यूज किया गया था एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ठीक है एंड सॉफ्टवेयर यूज किया गया था ग्राफिकल इंटरफेस यूनिक्स रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा एंड मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज किया गया था एंड पॉइंटिंग आउटपुट इनपुट डिवाइस pointing device keyboard and monitor यूज किया गया था and language high level language like C++ database etc. and fourth generation computer का जो example है IBM PC star 1000 APPLE 2 and Apple Macintosh Walter 8800 etc. are the example of the fourth generation of computer and advantage highly reliable and very less maintenance storage capacity very large storage capacity very large and faster. ठीक है
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1990 टू प्रेजेंट, ठीक है, based on the artificial intelligence use of the ultra large scale integration ULSI technology and parallel processing method, and software internet multimedia software parallel multiprocessing operating system etc. and मेमोरी यूज किया गया था ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा, एंड लैंग्वेज यूज किया गया है अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल अ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स etc are the example of the fifth generation computer, and it is portable, advantages portable and small in size and faster than before, ठीक है। तो डन, इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share my video, and thanks for watching.